Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we have got the following contents, so let's discuss. The first category of news that is in your article today's is the EWS quota, that is the economically weaker sections quota. तो यहाँ पे क्या बोला गया है सेंटर टू एससी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, कि ईडब्ल्यूएस कोटा गिवन फ्रॉम 50% जनरल कैटेगरी सीट्स, जो आज हम लोग का ईडब्ल्यूएस कोटा है वो कहां से दिया गया है? इट इज फ्रॉम द 50% ऑफ सीट्स दैट इज डायरेक्टली ओपन टू ऑल. Okay, so therefore you can see that today there is a contest between the seats that has been assigned to this EWS people. बिकॉज आज बहुत जगह हम लोग को देखने को मिलता है कि लाइक द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिजर्वेशंस फॉर दिस ईडब्ल्यूएस ऑन द सीट्स ऑफ दिस जनरल कैटेगरी सीट्स. सो टुडे व्हाट आई से अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी सो फार. See, until 2007, no reservation was implemented with the all India quota. Okay, so by that period of time, there is a growing contest with respective to medical admissions. So उस time 31 January 2007 में एक केस आया था अभयनाथ versus University of Delhi and others. And at this very case, the Supreme Court directed that the reservation of 15% for scheduled castes and 7.5% for the scheduled tribe to be introduced in the all India quota. And the same year, the government passed the Central Educational Institutions Reservation Admissions Act 2007, providing for 27% reservation for the OBC students. Okay, so the 10% EWS quota under the Constitution 103rd Amendment. Okay, the 103rd Constitutional Amendment Act of 2019 implemented in central education institutions but not in the all India quota for state institutions. What led to the decisions of providing this EWS? Today you can see that the denial of the OBC and the EWS reservations has been the subject of protest for years. In July, even last year, I can directly say that the Madras High Court ruled that OBC students too can avail reservations in the all India quota. And it held that the reservation could not be implemented for the then academic year. So today, if we see about the background of the EWS, it is said that the 10% reservation was introduced via this amendment, and it added the clause of 15(6) as well as 16(6). Okay, and it allows reservations in educational institutions, both in public and private sphere, whether aided or unaided, excluding those run by minority institutions. So in this case, we could see that it is very clear that the EWS reservation will be in addition to the existing reservation. Okay, so the inception of this EWS quota was granted based on the recommendation of a commission. ये commission बहुत important है. इस commission को हम लोग बोलते हैं Major General Retired S.R. Sinho, S-I-N-H-O, S.R. Sinho. And the Commission for Economically Backward Classes was constituted by the then UPA government in 2005, who submitted its report around 2010. And based on this, the cabinet in January 2019 decided to amend the Constitution 103rd Amendment to provide reservation to the EWS. Okay, so what is the significance of this quota today? The very first significance of this quota is that it is empowering the economically weaker sections, who are economically weaker and remains excluded from attending higher education institutions and public employment due to their financial incapacity. Also, secondly, it has got constitutional recognition of the economically backwardness, because the proposed reservation through a constitutional amendment would give constitutional recognition to the poor from the upper caste. Also, thirdly, reduction of caste-based discrimination, because it will gradually remove the stigma associated with the reservation, because reservation has historically been related with caste, and most often the upper caste look down upon those who come through the reservation as somewhat inferior. Okay, और एक केस में यहाँ पे बोलना चाहता हूं about राम सिंह versus Union of India. ये आया था 2015 में. And SC, that is the Supreme Court, asserted that social deficiencies may exist beyond the concept of caste.
मतलब इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर आइडेंटिटी एज इन ट्रांसजेंडर्स। तो ट्रांसजेंडर्स में भी हम लोग देख सकते हैं दैट देयर आर सोशल डेफिशिएंसीज, ओके, मोर देन द कास्ट। सो देयरफॉर यहां पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया गया एंड द आइडेंटिफिकेशन इज मेनली, यहां पे इनकम लिमिट बताया गया कि द main criterion is that those above an annual income limit of rupees 8 lakh are directly excluded from this, and it accounts income from all the sources such as salary, businesses, agricultural, सब आता है इसमें, okay, and the EWS pool possession of this assets too can take a person outside this EWS pool। मतलब अगर मान लो किसी के पास 5 एकड़ का जमीन है, रेसिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, ओके, रेसिडेंशियल प्लॉट है 100 स्क्वायर यार्ड्स का, रेसिडेंशियल प्लॉट है 2 स्क्वायर यार्ड्स का, तो ये सब थोड़ा बहुत कैटेगराइजेशन है जहां से ईडब्ल्यूएस कोई ले नहीं सकता। ठीक है, तो अभी व्हाट आर द कोर्ट्स क्वेश्चंस अबाउट द क्राइटेरिया। कोर्ट ने क्या क्वेश्चन किया था सेंटर को, ओके, कोर्ट ने बोला कि जो आपने रिडक्शन कर दिया जनरल कैटेगरी का, क्या वो जायज है? द आर्बिट्रेरीनेस ओवर द इनकम लिमिट, क्या वो सही है? अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द ईडब्ल्यूएस पीपल, क्या वो भी सही है? ऑल्सो अबाउट द मेट्रोपॉलिटन क्राइटेरियास, because today if you see that there are other questions whether any exercise was undertaken to derive that extractions, such as why the flat criterion does not differentiate between metropolitan and the non-metropolitan areas। तो क्या सब जगह आप लोग ये लगा सकते हो? okay, also these data are not based on relevant data। also we could see various number of breaches in the reservation cap, because in a very important and a famous case of Indira Sahani in 1992 versus Union of India, यहाँ पे बोला गया है कि there is a cap of 50% on reservation as ruled in this case, and the principle of balancing equality ordains reservation। तो यहाँ पे equality कहाँ है? ओके, आप लोग जो 50% का अनरिजर्व कैटेगरी का सीट है उसमें आप लोग 10% घुसा रहे हो, मतलब 40% ऑफ द सीट्स आर डायरेक्टली नाउ ओपन, व्हिच इज ओपन टू ऑल। तो बाकी लोग जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो कहां जाएंगे? तो सेंटर इसीलिए यहां पे उनको जवाब देने के लिए बोला था। तो सेंटर ने ये बोला कि दिस 50% इज बीन गिवन और दिस 10% इज बीन गिवन फ्रॉम द एरिया ऑफ द 50% ओपन कैटेगरी सीट्स। ओके, तो ये अभी यहां पे चल रहा है, because today there are various number of issues that has been faced by the EWS quota। okay, hasty legislation है, minority appeasements है, okay, morality is directly put to question because it is obviously against the constitutional morality and property। okay, obviously we can see the under reservation backward classes। okay, then the rationale of 10% was never discussed in every forums। okay, also the principle of equality is totally been disturbed over here, because the economical backwardness is quite a fluid identity। it has nothing to do with historical wrongdoings and liabilities caused to the backward classes। तो ये भी एक particular issue है। okay, so therefore we can see that we should directly tackle to preserve the merit first here। also the criterion should be on a very rational basis, judicial guidelines को follow करना चाहिए, and we should target the beneficiaries which need such number of reservation in the coming times। okay, so therefore reservation is a constitutional scheme to ensure the participation of the backward classes। okay, and the EWS quota with above discussed ambiguities in the subversion of the constitutional scheme for reservation। तो ये प्रॉब्लम है आज चल रहा है अबाउट द EWS quota। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, PAC framework। तो when I say about the PAC, okay, it directly says कि RBI removes Central Bank of India from the PCA framework। okay, so if I say about this news, तो PCAF क्या होता है? It directly says about the prompt corrective action framework। तो PCAP क्या है? Prompt corrective action। okay, ये होता है PCAP। So the Reserve Bank of India removed the Central Bank of India from its PCAF after the lender showed improvement in various financial ratios, including the minimum regulatory capital and net not performing assets। and the RBI has imposed the PCA norms on the bank back then in 2017। लेकिन आज ये हटा चुका है, ड्यू टू, उस टाइम क्यों लगाया गया था? जस्ट बिकॉज इट हैज गॉट हायर एनपीएस। ओके, जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत ज्यादा था।
So the RBI has imposed the norms that period of time out of the negative return of the assets, and after reviewing the performance, today the RBI decided to remove the PCAF from this respective bank. तो ये PCAF जो बोल रहा हूं वो होता क्या है? See, the PCA norm is a supervisory tool and is imposed when a bank breaches certain regulatory thresholds on capital to risk weighted assets ratio, जिसको हम लोग बोलते हैं CRAR, capital to risk weight assets ratio. Okay, so यहाँ पे दिया गया, also known as capital adequacy ratio. ठीक है, and it is the bank's capital which is directly at risk. So यहाँ पे RBI initiated such number of schemes back then in 2002, and in the time period of the early 2018s, we can see various number of banks were directly categorized under this PCA framework. Okay, and out of this 12 banks, 11 of these banks were directly coming in from the PSBs, that is the public sector banks. So what is the basic objective of this PCA? So the PCA is a framework under which the financial institutions with weak financial metrics are put under the watch by the RBI. Okay, and the move comes in the wake of large number of non-financial assets, non-banking financial corporations, such as various number of groups directly come into prominence, which created some form of financial trouble over the last few years. So therefore, the framework will apply and will directly make every banking organizations to make their threshold in a very good status, so that they could be protected in a much better way and they could be very much liable for this country's growth. So what are the tracking indicators? Tracking indicators यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे tracking indicators main है, that is the capital to risk weighted asset ratio. तो ये क्या है? It is the bank's available capital expressed as a percentage. Okay, next है हम लोग का net NPA, that is the net not performing assets. हम लोग देखते हैं कितना non performing assets है उस बैंक में. ओके, जहां पे लोन्स आया नहीं है अभी तक. ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज के ऊपर अगर एक लोन नहीं आ रहा है तो वी डायरेक्टली डिक्लेयर इट एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ओके, आल्सो द रिटर्न ऑन एसेट्स, that is refer to the financial ratio that indicates how profitable a company is in relation to its total assets. ये बैंक और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कितना प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, तो वो भी हम लोग देखते हैं. तो ये तीन चीज है जो ये PCA फ्रेमवर्क देखता है. तो दैट इज अ directly a supervisory intervention of the RBI over the banks so that banks could perform well. Okay, तो ये है about the small news about the PCA framework. Next पे आते हैं, भोपाल ट्रेजेडी प्ली. तो यहाँ पे बोला गया है क्लैरिफाई स्टैंड ऑफ द भोपाल ट्रेजेडी प्ली. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप लोग क्लैरिफाई कीजिए, ठीक, कि आप लोग का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया है, यहाँ पे आप लोग कितने अलाउंसेस दिए हैं टू द डेड, टू द पर्शियली डिसेबल, टू द टेम्पररी डिसेबल. तो यहाँ पे वही सब बोला गया है. Okay, so in this time period, if I am directly going to the past, on 3rd December of 1984, missile isocyanate gas leaked from a pad of Union Carbide India Limited at Bhopal, that is in Madhya Pradesh. Okay, and therefore we can see that this has got a very dreaded element in the past. 1984 से आज तक भी हम लोग देखते हैं the effects of this tragedy. Because today, if you see, 500,000 of survivors suffered from respiratory blindness, muscular dystrophy, and other maladies resulting from exposure to the toxic gas. Okay, so in this scenario, if you see that methyl isocyanate जो leak किया गया था, it is extremely toxic gas, बहुत toxic है. Okay, and its concentration in the air touches around 21 ppm parts per million. इतना concentration है in the air, which could cause death within minutes of inhaling it. And it is one of the worst chemical disasters globally and still continues to have its ill effects on the people of the affected areas. So today, if you see that during this period, जब 1984 में लीक हुआ था, तो कितना अमाउंट लीक हुआ होगा जो आज तक खत्म नहीं हो रहा है. तो it is estimated, there is no proper data, but it is just estimated that it is around 40 tons of gas and other chemicals that were leaked from this Union Carbide factory. Okay, so therefore because we have caused a lot many number of deaths, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था कि आप लोग फैमिली ऑफ द डेड के लिए इतना अमाउंट दीजिए. ओके, दैट इज अराउंड 10 lakhs, 3 to 10 lakhs. तो फुल और पार्शियली डिसेबल को दीजिए 50,000 से 5 लाख तक.
दोज विद टेम्पररी इंजरी उसको दीजिए 25,000 से 1 लाख तक। तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है कि how this could be very much taken down, because today if you see about this industry, about the Bhopal Gas Tragedy industry, okay, so many number of peoples who today are directly suffering just because of this ailment, okay, they have a better life to give to their future offsprings. लेकिन अगर आज offsprings ही उल्टा सीधा या कोई डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहा है, then the whole workforce is directly suffering just because of this incident. तो इसको ठीक कीजिए, नहीं तो एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पैकेज दीजिए सो दैट दे कुड मेक देयर ऑफस्प्रिंग्स और देयर फ्यूचर very much in a good well-being, which is very much of healthy also, which can also contribute more and more number of resources to the respective workforce. तो यहाँ पे वही सब बोला गया है about the clarified standing on the Bhopal Gas Tragedy, जो एक हम लोग का एक dreaded incident था about this date, that is 3rd December of 1984. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं ग्रेट स्टार डायमंड। ओके, तो ये चल रहा है अबाउट अभी जैसे ही हम लोग का यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ 2 अभी यहाँ पे जब डेथ हो गई इनकी, ठीक है, तो अभी चारों ओर से मेनली यहाँ पे आया था इंडियंस की तरफ से। ओके, क्योंकि इंडियंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड है, उसको नाम बोलते हैं हम लोग कोहिनूर डायमंड। ये खाली इंडिया का नहीं बोलते, ये सब क्लेम करते हैं। ये इंडिया क्लेम करता है, ये पाकिस्तान क्लेम करता है, ये ईरान क्लेम करता है, ये अफगानिस्तान भी क्लेम करता है। तो ये चारों कंट्री क्लेम कौन करता है? कोहिनूर को। ओके, सो कोहिनूर कहीं यहाँ पे है, ये मुकुट है, देख सकते हो, ये कोहिनूर यहाँ पे लगा होता है। ओके, कोहिनूर। ओके, सो इन दिस सेंस टुडे इट इज डायरेक्टली सेइंग अबाउट द ग्रेट स्टार डायमंड ब्लैक। ओके, पोस्ट क्वीन डिमाइज, तो ये यहाँ पे लगा रहता है। दिस इज द ग्रेट स्टार डायमंड। ये जो छड़ी होती है उस छड़ी में होती है ग्रेट स्टार डायमंड। ओके, तो अभी देयर इज अ रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट आफ्टर द Britain's longest reigning monarch with Elizabeth II demise broke, microblogging site saw a bizarre trend with the word Kohinoor, which was trending on the social media platform. Okay, and we can see that it gained more audience as compared to the Queen's death. Queen's death को कोई भाव नहीं दे रहा था, लेकिन कौन भाव किसको दे रहा था? डायमंड को ज्यादा भाव दे रहा था। ठीक है, तो however the Kohinoor is not only the famous and the most controversial of all the London's crown jewels. The world's largest known clear-cut diamond, that is the Great Star Diamond, was gifted to the then British ruler by the colonial rulers of the South Africa. And calls of returning what belonged to the African country has been growing in the wake of Queen's demise. So ये जो Great Star of Africa है, okay, जो हम लोग बोलते हैं कि it is directly the greatest diamond. Okay, it is directly gifted to the Queen at that point of time. So ये इसका और एक नाम है, उसको बोलते हैं हम लोग कलिनन, CULLINN, कलिनन। And it is a diamond which is cut from a larger gem that was mined in South Africa around 1905, which was handed over to the British royal family by the South African colonial authorities. Okay, so यहाँ पे जो रॉयल स्कैप्टर है, इस स्कैप्टर के यहाँ पे ये जो ग्रेट स्टार डायमंड ब्लैक है, ये यहाँ पे दिया जाता है। So therefore, the demand was directly growing prominence in South Africa for the return of this great star, along with the calls for repatriations of this stars. So therefore, अभी यहाँ पे जो colonial gifts है, इन सब कंट्रीज, अभी बहुत सारे कंट्रीज का डिमांड है, ओके, कि इस जितने भी colonial gifts है, यहाँ जितने भी आपके मुकुट में जो जो चीज है, ये सब चुराया हुआ है, तो आप इस सब को रिटर्न कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेट स्टार डायमंड वेरी मच इन न्यूज विच बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, ये देख लेना। ठीक है, आ सकता है कभी पे एमसीक्यू में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। श्रीलंका पाकिस्तान वेटिंग फॉर ग्लोड्स। ओके, तो देख सकते हो क्या हालत हो गया है। ओके, अबाउट दिस कंट्रीज, ओके, दे आर टोटली इन चाइनाज डेप्थ ट्रैप। कहां पे चला गया? चाइनाज डेप्थ ट्रैप के अंदर चला गया। तो वी नो अबाउट दिस पॉलिसी, हम लोग वार्निंग भी किए थे श्रीलंका को। चलो पाकिस्तान को तो कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, ओके, क्योंकि लाइक एक ऐसा कंट्री है जो किसी के बात नहीं, और इंडिया के बात तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उनका बाप कौन है? चाइना है। ठीक है, so in this scenario today we could see that Sri Lanka is directly in a state of economical collapse. Okay, so see, this debt trap diplomacy of China is directly termed as an international finance, which describes a creditor country or institution extending debt to a borrowing nation, partially or solely to increase the lender's political leverage. So ये जो debt trap है, ये भी कॉइन किया गया था एक इंडियन के द्वारा ही। उनका नाम है ब्रह्मा
चेलेनी, ओके, ब्रह्मचेलेनी, इन्होंने ये टर्म दिया था अबाउट डेप्टर, ओके. And a creditor country is said to extend excessive credit to a debtor country with the intention of extracting economical or political concessions. Okay, so how does this China's debt trap diplomacy works? So see, in a push to gain some of the political gains as well as economical gains across the globe, China क्या करता है? It dispenses billions of dollars in the form of concessional loans to developing countries. Okay, and these developing countries, which are primarily low or middle income countries, are unable to keep up the repayments, and Beijing then gets a chance to demand concessions or advantages in exchange for debt relief. मतलब जमीन हड़पने का बात बोलता है कि चलिए आप लोग दे नहीं पाते हो क्योंकि आप लोग के पास पैसा नहीं है, आपने इतना उधार ले लिया, लेकिन अब आपको अपना जमीन देना है ताकि हम लोग वहां पे जो उधारी का आपका अमाउंट है वो हम लोग वहां से वसूल कर सके. So there are various countries which directly falls under this Chinese debt trap. और श्रीलंका, पाकिस्तान तो चलो बर्बाद हो गए. ओके, पाकिस्तान का कोई सवाल ही नहीं आता है कि पाकिस्तान अभी भी एक रिजिड इकोनॉमी है. पाकिस्तान चाइना का दान में चल रहा है. लेकिन जस्ट लाइक अबाउट श्रीलंका, श्रीलंका was forced to hand over the control of the Hambantota port project to China for 99 years after it found itself under massive debt owned to Beijing. And this allowed China control over the key port position at the doorstep of its regional rival India, and a strategic foothold along a key commercial and military waterway. So in this scenario today, if you see that the concessional loans granted by China is achieved either by offering interest rates that are below the market rates or leniency in the grace period, and often with a combination of both. And these loans generally have longer grace periods. Okay, so therefore today we can see that though India did not take direct loans from China, but there are some of the factors that the debt trap is directly affecting India's concern. क्योंकि जब श्रीलंका अनस्टेबल होगा, पाकिस्तान अनस्टेबल होगा, बांग्लादेश अनस्टेबल होगा, then obviously इसका असर कहां पड़ेगा? इंडिया में करेगा, because of the regional politics, because of the regional atmosphere of this debt trap. So in every forums today we can see that यहाँ पे चाइना अभी श्रीलंका और पाकिस्तान को लोन दे ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन लोग को पता है कि इन लोग को लोन दे दूंगा लेकिन वापस तो आएगा नहीं, ऊपर से इन लोग का हालत इतना खराब है. ओके, बिकॉज टुडे व्हेन दे आर नॉट गेटिंग लोन्स डायरेक्टली फ्रॉम चाइना, they are directly turning it to the International Monetary Fund. Okay, so rather than restructure Sri Lanka's existing debt, Beijing has indicated that it would prefer to extend new loans to an already heavily indebted economy. और अभी जब लोन देंगे फिर से चुका नहीं पाएंगे, फिर से क्या होगा? आज हम्बनटोटा गया है, कल कोलंबो जाएगा. ऑलरेडी कोलंबो का एक पार्ट चला ही जा रहा है, बिकॉज चाइना इज डायरेक्टली बिल्डिंग अ कमर्शियल सिटी ओवर देयर, जहां पे ओनली चाइनीज नेशनल्स आर अलाउड एंड नो श्रीलंकन नेशनल्स आर अलाउड. तो ये तो चल ही रहा है. तो इन लोग का हालत बदतर होते जा रहा है. बट इंडियाज ग्रोइंग कंसर्न इज जस्ट बिकॉज दैट यहाँ पे श्रीलंका, पाकिस्तान बहुत इंडिया का नजदीक में आता है, एंड श्रीलंका इज ऑल्सो अ फ्रेंडलियर कंट्री एज कंपेयर टू पाकिस्तान. ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रोइंग कंसर्न है. ओके, देन लोंगकोन फेस्टिवल, ये जनरली असम से रिलेटेड है. असम पीसीएस में ये सब पूछ सकता है. इट्स अ ट्राइबल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द एरियाज ऑफ कार्बीज. ओके, सो ये जनरली कार्बी आंगलोंग में देखने को मिलता है. ठीक है, सो टीवा ट्राइब्स डांसिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द लोंगकोन फेस्टिवल इन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, एंड ड्यूरिंग द एनुअल फेस्टिवल फार्मर्स प्रे फॉर अ गुड हार्वेस्ट. तो ये गुड हार्वेस्ट के लिए प्रे करता है through all such number of tribal dances. Okay, so there are two parts of it, Sakha Lakhun Puja and Tara Lakhun Puja. So it is observed in the Kati season, which will directly come after the Ahin season, and this puja will be observed the week after the former. इसके बाद ये डायरेक्टली तारा लखन पूजा शुरू होने वाला है. ठीक है, so therefore they worship bamboo for 4 days between October and December. तो इसीलिए इसको लांगकुन बोला गया, and this are particularly done by the Lalungs, which are directly done ethnic groups. Okay, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. Editorial about the lumpy skin diseases. So when I say about this lumpy skin diseases, so it is caused by the lumpy skin disease virus. ये बहुत अभी ग्रो कर रहा है, because today various number of cattle, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हालत बन जाता है. ठीक है, तो there are various number of cattle which are directly affected by this lumpy skin diseases, and ये mainly अभी गुजरात में बहुत ज्यादा तांडव मचा रहा है. ठीक है, because it is a viral disease of domestic cattle, water buffaloes, and certain wild ruminants. ये incubation period of this LSD is around 28 days, but experimentally अगर हम लोग देखें तो it infected the cattle may develop clinical signs as early as 6 to 9 days.
and it heavily impacts the animal health and welfare and can lead to severe economic losses in the affected farms. Okay, so recently it has been spreaded to and within Asia, posing a threat to the countries which is directly coming under the Asian continent. So how does this animal get infected? Supposedly this LSD virus, okay, they directly forms first. They directly go for the biting flies. Okay, biting flies से mosquitoes में चला जाएगा, mosquitoes से ticks पे चला जाएगा, ticks से they can go for dairy cattle or the wild buffaloes. Okay, so therefore we can see that today even the FAO, that is the Food and Agricultural Organizations, यहाँ पे उन लोग को बोला गया, उन लोग के हिसाब से बोला गया कि the mortality rate is around less than 10%, but lumpy skin disease is rapidly going viral in some of the parts of the continent. So lumpy skin disease ये पहले हम लोग को कहाँ मिला था? ये 1929 में मिला था जाम्बिया में. Okay, so Africa से because of the conditions over there, because of the conditions suitable for the formation of the virus, तो यहाँ पे हम लोग को सब वायरस जनरली हम लोग का अफ्रीका से ही मिलता है. Okay, so initially ये आया था result of the either poisoning or hypersensitivity to insect bites, लेकिन धीरे धीरे ये एक वेक्टर का रूप ले लिया. Okay, lumpy skin disease primarily spread between animals by biting insects. Okay, so ये वेक्टर का रूप ले लिया, and it primarily consists of fever, fluid excretion from eyes and nose. Okay, so and as animal stops eating. Okay, तो ये सब and also reduce the milk production. तो ये सब होता है. ठीक है, आज इसका जो एक prevention and treatment है, so we cannot see there is some of the specific antiviral drugs available for the treatment of lumpy skin diseases. But if we go for a vaccinations against the disease is covered under the livestock health and disease control program of India. Okay, also some of the anti-inflammatory painkillers can be used to keep up the appetite of the affected animals. ओके, तो इसीलिए ये अभी बहुत ग्रो हो रहा है. गुजरात से आ रहा है, ठीक है, वेस्टर्न रीजन से आ रहा है, ठीक है, तो ये जनरली इक्वेटोरियल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा होता है. ओके, तो देयरफॉर यू कैन सी स्लोली एंड स्लोली इट इज डायरेक्टली इवन कमिंग अप टुवर्ड्स द होल नेशन. अभी पूरा नेशंस में फैलने वाला बाकी है अभी, बिकॉज वी हैव गॉट अ लॉट मेनी नंबर ऑफ कैटल स्टॉक्स, a lot many number of livestock today we have in our country. Okay, so we directly place in some of the top countries of going in for the livestocks. Today many people are directly dependent on these cows, on these cattle for their milk production, for their other agricultural purposes. तो अगर ये लोग थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाता है, ये लोग इनएफिशिएंट बन जाता है, then obviously it will be a great economic loss for a country like India. ओके, सो यहाँ पे ये डिजीज का एक बात चल रहा है, अभी धीरे धीरे फैल रहा है, तो देखते हैं अभी हम लोग क्या कर सकते हैं. बट वैक्सीनेशन, क्योंकि यहाँ का जो एंटीवायरल ड्रग्स है, ये ड्रग्स हम लोग का अवेलेबिलिटी नहीं है आज, सो वी आर डायरेक्टली ट्रीटिंग द रेस्पेक्टिव सिम्टम्स. ओके, तो हम लोग का जो सिम्टम्स आता है, जैसे फीवर हो गया, फ्लूइड एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, स्टॉप ईटिंग, ओके, देन चिविंग और ईटिंग रिजल्टिंग इन रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, ये जो सिम्टम्स है, तो ये सिम्टम्स को हम लोग ट्रीट करने का चाह रहे हैं. तो देखते हैं अभी इन फ्यूचर हम लोग क्या कर सकते हैं अबाउट दिस लंपी स्किन डिजीज. ओके, सो ये देख सकते हो, दिस इज द एरिया. ठीक है, चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो वी हैव गॉट 5 नंबर ऑफ एमसीक्यूज, तो अटेम्प्ट कर लेना. ठीक है, अटेम्प्ट करके यू कैन फाइंड द आंसर्स इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ अस, और ये टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोग को ये डायरेक्टली नीचे लिंक में मिल जाएगा. ठीक है, वन मेंस क्वेश्चन इज देयर, यू कैन डायरेक्टली अटेम्प्ट द मेंस क्वेश्चन एंड कैन डायरेक्टली सबमिट इट via the email or in the telegram channel of us. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.